बहुत अजीब लोकेशन है. दिस इज़ द छत ऑफ माई हॉस्टल एंड आई एम सिटिंग राइट हियर एज यू कैन सी. क्योंकि अगर मैं खड़ा हूँगा तो लोगों को दिखेगा एंड आई डोंट वांट दैट. एंड अगर नहीं खड़ा हूँगा तो लाइट नहीं आएगी एंड आई डोंट वांट दैट एज वेल. एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक. सो एज आई डिसाइडेड कि मैं सोच के वीडियोस बनाऊँगा विद एन आइडिया. I have a great idea, I think, and it is the 6-month rule. What is the 6-month rule, you might ask? Maybe think or whatever. Let me be very clear to you. It's not a normal rule. It's one of the rules that I figured out or understood along the way of my life, or maybe studied somewhere, understood. And yeah, mostly just experienced it. So, क्या होता है ये 6-month rule? Basically, whenever you look at something or choose something or do something, you must give priority to it for 6 months. Let me take my example. YouTube is not my priority right now. I'm going to be very, very honest. My first priority is my girlfriend right now, because 3 months ago when we started, I have to give priority to her for at least 6 months so that I can understand her, I can be with her, I can just get to know her more, and with that I can understand. And after 6 months, when I get comfortable with her enough, then I can make her my priority number. She'll still be my priority number 1, but I can still give more priority to something else like YouTube or maybe my studies. Right now my studies is also my second or third priority, maybe, because the first one is her. I need to dedicate most of my life to her, because if I do, then I understand my partner and I can understand how I could go forward in life with her. Right now I am studying. It is kind of my second priority. Whenever I have tests, I study for them. I know what I am going to do. YouTube is one of my third priorities. That is why I upload videos so rarely, but I have taken the 150-day challenge just so that I can push myself to upload. क्योंकि I'm a lazy bastard who wants stuff and lazy people don't get stuff. So I'm just training myself to not be lazy, and इसीलिए रोज़ वीडियो आती है. मैं जिम भी रोज़ जाता हूँ, वो भी मेरे लिए प्रायोरिटी है. बट द थिंग इज़, अगर कल मुझे एक चीज़ डिसाइड करनी पड़े कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जिम जाना है, पढ़ना है, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, I'd always choose a चीज़ें सॉर्ट आउट करने वाला. बिकॉज राइट नाउ फॉर एट लीस्ट 6 months शी इज़ माई मेन प्रायोरिटी. Then comes YouTube, then comes studies, then comes my physique. इसीलिए मैं इतना हैवी ट्रेन नहीं कर रहा, प्रोटीन नहीं ले रहा, and whatever. At the end of the day, I'd just like to share, whenever you choose something, just make it a priority for 6 months and try to let it be the priority for 6 months. Give it so much importance that it can't, मतलब वो जा ही ना पाए. मतलब इतनी इम्पोर्टेंस दे दो. मतलब मान लो मेरे को तो स्टडीज़ मास्टर्स तक करनी है ना. आफ्टर दैट फाइंडिंग अ जॉब वुड बी माई प्रायोरिटी. डूइंग स्टडीज सो गुड दैट आई गेट अ जॉब वुड बी माई प्रायोरिटी. राइट नाउ टॉकिंग टू हर इज़ माई प्रायोरिटी बिकॉज आई वॉन्टेड टू वर्क. इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आई वॉन्ट टू सक्सीड इन यूट्यूब, बिकॉज आई डू वॉन्ट टू. आई जेन्युइनली मैं अपने दिल से चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे सक्सेसफुल हूँ, बट आई वॉन्ट टू बी अ थेरेपिस्ट दिल से. Like, I really think I would make hell lot of difference to this world after becoming a therapist, and hence that is my priority than YouTube. YouTube is just a hobby, it's just a skill to learn. I will definitely continue YouTube for sure, not quitting YouTube anytime soon. But yeah, so that was the topic. Thumbnail थोड़ा सा clickbaity हो सकता है क्योंकि I'm gonna put I quit in the thumbnail ऐसे somewhere over here. I'll write जैसे ये वाली फ़ोटो में भी, and I'll say I quit. And that's because I want more people to watch this, and I'm going to try clickbaiting. देखते क्या होता है. एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ वैसे भी. अभी 150 वीडियोस तो मेरे एक्सपेरिमेंट ही हैं. एंड या देखो ज़मीन पे बैठा था मैं, एंड बहुत गर्मी हो चुकी है, तो शॉर्ट्स whatever. And yeah, that was it for the video. Thanks for watching. Bye bye.